let us start our module 3. In this module, we will be discussing different section properties for the columns, beams, slabs, and structural walls as per ACI 31819. And then we will move towards the stiffness modifiers. That what are the different stiffness modifiers as per the ACI code. And then we will define load patterns in ETAP, different load patterns, for example, live load, SDL, earthquake loads. And then we will define response spectrum case in ETAP. And then we will talk about the different load combination that we'll be using during this design course. And the last one is the mass source. For the columns, there is no such limitation on the sizes as long as you provide the minimum reinforcement and fulfill all the requirements as per the code. So if you are designing your structure only for gravity loads, for example, not in the high seismic zones, and it is 1-story or 2-story, if you want to design it only for gravity, then you can go to the chapter number 10 of ACI 31819, which is about the different requirements for the columns if you are designing your structure only for gravity loads. You can check it out, the section R10.3 design limits, which is the dynamic dimension limits. The explicit minimum sizes for the columns are not specified to permit the use of the reinforced concrete columns with small cross sections in lightly loaded structures such as low-rise residential and light offices built. It says, I have added in the commentary that for the high-rise building, there's also no such limit. You can use any sizes, but as long as you fulfill all the requirements that has been imported for the columns in the design for the seismic loads. So this chapter number 10 is purely for the typical columns used for the design for the gravity loads, and its limitation. For example, if I talk about the one limitation, it is minimum reinforcement is 1% to 8%. For the columns of special moment frame, if you are designing your columns for the seismic forces, then you have to go to the chapter number 18, section 18.7, and you can compare the different requirements of chapter number 10 and 18, and you will find a very large amount of differentiation in the requirements as per the code. So the first limitation is the dimensional limits. It has limited the dimension limits, but it is only in one direction. And it says the column shall satisfy A and B. The first one is the shortest cross-sectional dimension made on a straight line passing through a geometrical centroid shall be at least 12 inches. So normally the sizes for the high-rise building will be obviously greater than 12 inches, but it has imported this limit on the columns if you are designing your structure for the earthquake forces. And the second limit is the ratio of the shortest cross-sectional dimension to the perpendicular dimension shall be at least 0.4. So these two limits shall be satisfied. Otherwise, your column will not be designed as a special moment frame. Another limitation for the reinforcement is the area of, in section 18.7.4, that the area of longitudinal reinforcement AST shall be at least 0.01 AG, means 1%, and shall not exceed 0.08 AG, 6 AG, which is 6%. For the ordinary columns, the limit is 8%, but for the seismic resisting frame columns, the limit is 6%.
And in columns with circular roofs, there shall be at least 6 longitudinal columns. So let us go to the Excel sheet. This is a small Excel sheet I have developed for the checking of the columns for SMF checks. These two checks are this dimensional limits, check A and B. So this is the short side and this is the long side. And for example, if you take the size of 9 cross 9, so the second limit is okay. The ratio of cross-section, shortest cross-sectional dimension is 0.4, which is size is okay. But increase column size, it says that the first limit is not satisfied. It should be 12 inches. For example, if I write 12 and 9, so this size is okay. But you cannot take 12 for this side as well. So cross 12 is the minimum size for the SMF columns. And for example, if I take this as 24 and this is 48, so the size is okay because the ratio is 0.4. But if I increase it further up to, for example, 72, so it says they change the column size. It means the longer side is very large as compared to the shorter side. So either you have to decrease this longer side or you have to increase the shorter side. For example, let me increase this to 40. So this requirement, second requirement is fulfilled. Or you can decrease size. For example, let me 6, it is not working. Let me take 63, still not working. And if I take 60, so it is working. For example, let me find the ratio of this. So it is 24 divided by 60. So this ratio is 0.4. So this the ratio of these shortest to longest should not be greater than 0.4. So I will share this sheet as well. So these two requirements and the enforcement requirements shall be fulfilled in the design, but in the modeling stage, in the initial stage, you should fulfill these two requirements. For this building, which we are designing, which is 20-story building, the sizes are normally is taken on based on the experience, and on my experience, I have taken the interior column sizes starting from 48 inches cross 48 inches, which is 4 feet cross 4 feet, and it will go up to in 5 stories, and the FC prime will be 6,000 psi. And when we go up above this fifth story, total 5 story, the size will decrease to 45 plus 45. It will move. It will go in 5 stories again. The FC prime will be 6,000, and please note this question with you, and we will discuss it at the end of this lecture. 42 cross 42, and it will again go to the 5 stories. FC prime will be 5,000, and at the end, in the last 5 stories, the size will decrease to 36 cross 36, and the FC prime is 5,000. For the exterior columns, we will take it as a 42 cross 42 because the load is comparatively less on the exterior columns as compared to interior columns. But do not take very low size because you will face issues in the torsion irregularity and the drift. So the exterior columns is 42, the FC prime is 6,000 in 5 stories. Then again, we have kept as 42 in the 5 stories. So it will move in 10 story is 42 cross 42. And the main reason I have told you that when you decreases the exterior columns very abruptly, in for example, in 5 stories, then it make it 36. So you will face drift issues and torsion irregularity. So try to do not decrease the column size for the exterior columns in your building. And again, we will decrease the size to 36 in 5 stories and 30 plus 30 and again in the last 5 stories with FC prime of 5,000 psi.
So we have a range of 5 stories in each. Let us go to the E tab. And we will go to the section properties, frame sections. And let us define new property, concrete, rectangular. And we will name it as C48 cross 48 with 6 KSI FC prime. So if there is no 6 KSI, we will click on this dotted bar. We'll add new property. We will select United States. We will select concrete and we will select 6000 PSI. Click OK. It has been defined. We have no 5000 PSI. Again, we will add new material and select FC prime 5000. Click OK. OK. Now select from the drop down menu 6000 and the depth is 48 plus 48. Click on the property modifiers. We will change the modifiers and we will insert the factors later on. We'll keep as default. And reinforcement, click on the modifier show rebar. And you can see there's a different information. Rebar material you are using is grade 60. It is column, click on the column. If it is beam, you have to click on the beam. So it is column. The reinforcement, the lower tab is for the checking of the existing columns. You have to, for example, click on this reinforcement to be checked. And then you have to insert the data of the reinforcement in the existing column, and it will give you the demand to capacity ratio. But this time we are actually designing a new column, so we click on the reinforcement to be designed. Click OK and click OK. Now take copy of this column and name it C45 cross 45 with FC prime of 6 KSI. This is again, it is column. Click OK. Now again take copy of one of these and name it C42 cross 42, and this time the FC prime is 5 KSI. Select 5 KSI. This is 42. Again, so the first column will be completed with 5 KSI, and that will be 36. Again, take a copy of this column. We will now define. No need to define another because we have to define it with 42 cross 42, having 6 KSI. Right? And click OK and let us check. It is 42 and 42, and then we have 36 and then 30. Again, go to the define section properties, frame sections, and click on this 42 cross 42. Take copy of this, and this is C36 cross 36 with FC prime 5 KSI. I think we have defined that 5 KSI. It is available, right? Let us define C30 plus 30. Yes. So this section has been defined, and we will, after talking about the modifiers, then we will modify it further. So as you know that we have 5 stories
similar columns. So you can take advantage of the one of the command of the E tab. You can see at the right hand corner we have you can see drop it down is menu one story, all story, and similar story. One story means if you select a column, it will be selected only in one story. And if you click on the all story, if you select the column, so for example, let me select this, so it will select the column in all the stories, right? So if you select on the similar stories, so if you select the column and if you have similarized the stories, then it will select the columns on those stories which have the same uh, properties of the story. For example, we let us do that. We will go to the right click on the add modifier grids, modify show story data. And you can see the fourth column, it says master story. And if you, this master story is no, if you click on this yes, so, and let us make it no. So this basement is now a master story. Now you can similarize this story, the master story of basement. Let me click on the basement. So when you click or select a column or make a change in the story of basement, so it will automatically change those, apply those changes on the ground story as well. So click on the basement. These are the story 1, 2, 3, 4, and then it is 5. So again, fourth story will be the master story, make it yes. Again, this is fourth, so this is third, fourth, and this is fifth. Again, make it yes. So again, it is select the ninth floor. This is 1, 2, 3, 4, 5, and again make it yes. Select 14. So these are again four. For example, this is 14. 1, 2, 3. 1, 2, 3, and 4. I think I have included this 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. This is 1, 2, 3, 4. This again we have the empty as well. So we have to select that it is 20. Click OK. So now I have selected the similar stories. So if I select one column, so it will select 5 frames. You can see at the left hand corner, 5 frames has been selected, and it will be selected only in the basement, first, ground, first, second, and fourth. You can see that. Reason for doing this that we are assigning the columns which are similar in the basement, ground, first, and second, so we will make it our work easy. So now we will go to the basement. We will hide the beams, walls, and floors. And similar story is selected. So now we will select the interior columns and we'll go to the assign frame section properties. And now we will assign the first range that was 48 plus 48, 6 KSI, click on apply. If you want to visualize it really better, so you click on this view by color section properties. So you can see with different colors, you can see that the sizes of these columns are different. Now we will select the exterior columns with again with the similar, and we will click on the 42 cross 42 6 years. Now the next master story, or the first one was the basement. Now the next one is fourth, and then we have 9. Now we will go to the plane and we will go to the fourth plane. Again, we will select the interior first. This is actually
The exterior are actually in the first stories. So these are also our first our exterior columns, right? Because this grid and these four grids has been removed in the ground floor, so it is also our exterior grid. And we will go to the fourth plan. This is the third and this is fourth. Now we will select the interior and change this to the 44 cross 44, and we will change the exterior to again the same value, same column size of 42 cross 42. Now we will move towards the plane 9. The interior columns are 42 cross 42 5 KSI, and the exterior is now changed to 36 cross 36 5 KSI. Now you can see the color has been changed. This is for third, fourth, fifth. Now this has to be changed. The interior is 36 cross 36, and the exterior is 30 cross 30. These changes of the column sizes is based on the experience and on trials. You have to change if the reinforcement, if the columns are overstressed, then you can increase the column sizes, you can increase the FC primes. But I'm doing it to show you how the design process is done, right? So we will select 30 cross 30 case. If I go to 3D view, we can see different colors. This is the extruded view. I click on the elevation. You can check it out. The different colors is show you the changes of the column in different stories. So this is how it is done. You can increase the column sizes, you can decrease the column sizes as per your requirement, as per your experience. For example, if this column is overstressed, for example, if this column is overstressed, then you can increase the size of this column and you can increase the FC prime, whatever the solution is best for you. Next is the beams, and the beams are initially you have to check the minimum depth of the beams as per the clear span of your proposed building. As per ACI 31819 table 9.3.1.1 defines the different minimum criteria for the depth. And these are the support conditions. For example, your beam is simply supported, so ln divided by 16 will be the minimum H. One end continuous is L divided by 18.5, both end continuous L by 21, and for the cantilever beams, it is L by 8, right? So what we do in the design of the building, that simply supported is not an option because we are designing our frame, and frame is not simply supported. The next one is one end continuous, and the next one is the both end continuous. So the both end continuous is L by 21, and one end is L by 18.5. So if you use this, so you will get smaller value. If you use this, so you will get a larger value of the minimum depth. So we will take the size of the beam as 15 cross
24 inches for one end continuous, and we will check that. How did I get these values? You can go to the Excel sheet for the beams, and for the beams, for the minimum depth, you have to insert the value of the clear span, and it will give you the minimum depth in inches for each of the condition. For example, the value is clear span of your building is 20 feet, so you will get 15 inches the minimum. For simply supported, one end is 13 and both end is 11. In our case, we have a clear span of 22.5. For example, we have a grid of 25 feet, right? So let me calculate this, 25 feet. So the size of the column in the lower story is 48. 48 plus 48, right? So it means 4 feet. So you have to subtract 4 feet from 25 for these lower stories, which is 21. And you have to insert the value of 21 in this step. So you will get the size for the one in continuous is 14 inches. But if you talk about the column size that has been decreased at the top stories, which is 30 plus 30, it means 2.5 feet. So if you subtract 2.5 from 25, so it is 22.5. So if I insert 22.5, so it will give me 13 inches. And for that, it was 11 inches. So it we have 2-inch gap. So you cannot make your project or proposed building drawings very complex to give the beam sizes different at the one story and give the beam column the other stories, and you keep on changing the beam sizes up to the top. So you have to take the smallest value. For example, I have taken the value of the column is 30 plus 30, and I've taken the larger value for the span, which is 22.5, and the minimum depth is 13 inches for the both end, and one end is 15 inches, but I have taken the H value is 24 inches, right? So this is H is I is equal to G. The clear length is 22.5 feet, and H required is 14.5 inches, which is less than 24 inches. So this check is okay. There is another check on the beams, which is done in here. You can see on these slides that for the special moment frame beams, there are some limitation on the beams as well. And there's also dimensional limits on the beams. And it says that the beams should satisfy A through C. The first condition is to satisfy that the clear span ln shall be at least 4D, right? So this is the clear length. These are the two columns, and the distance between the face of this column and this column, it is called ln, which is the clear length. And this clear length should be greater than 4D. And what is D? It is actually the effective depth of your beam. And it is, if you subtract the cover to the centroid of the reinforcement from the H value of the beams, which is 24 inches, and you will get the D is 21.5 inches. Right, so if you multiply this with 4, it will become 4D, and we are getting for our beam is 7.2 feet, right? So the minimum clear length for the special moment frame beams, it should be 7.2 feet. If it is less than 7.2 feet, for example, the span is 5 feet and the requirement is 7 feet, then you cannot design your beam as a special mount beam. You have to design it as a simple beam, right? So it will not satisfy this requirement. The next requirement is the width BW shall be at least the lesser of 0.3 H and 10 inches. So
is not included. So the next check is to check the 30% of the overall size of the beam, or it should be 10 inches. So let us check that B into 0.3 into 24, it becomes 7.2. So we have to take the value of 7.2 or 10 inches, so that 10 is maximum. You have to minimum width of the beam should be 10 inches, but we have taken the width of the beam is 15 inches. This is the second. The third is the projection of the beam's width beyond the width of the supporting columns on each side shall not exceed the lesser of C2 and 0.75 of C1. You can see this diagram. You have this column and connected beam. This one side is C2, the one side is C1. These are the dimension of the columns. And this portion, you can see this is called as projection. This projection length should not exceed the lesser of. For example, the C1 side is 48, right? So this length should not be greater than 48 or 0.75 of the 48. So you have to make sure these requirements are fulfilled. If it is not full, for example, the projection is greater, then you have to increase the width of the beam, because you cannot decrease the size column of the size. The column sizes you cannot be decreased as per your requirement, because you are designing a 20-story building. But when the projection is greater, then you can increase the width of the beam. You can make it 18 inches, 24 inches, 21 inches as per your requirement. Next is the longitudinal reinforcement, and it says that the beam shall have at least 2 continuous bars at both top and bottom faces. This is for the special moment frame beams, right? At any section for the top as well as for the bottom reinforcement, the amount of reinforcement shall be at least that required by 9.6.1.2, which is 0.0018 into BH, and the reinforcement ratio rho shall not exceed 0.025. This is the maximum limit on the beam reinforcement. Next are the walls. So let us go to the E tab. And we will go to the define section properties frame section, and click on the new property, click on the concrete rectangle, click on this rectangle and name it beam 15 cross 24. And we will take the FC prime of the beams and slabs of 4000 psi, because it is a high-rise building. Normally for the low-rise building, the material is taken as 3000, and but for the high-rise, it is advisable to take is 4000 psi. It's your choice. You are the designer. You can take it 4000, 3000, whatever your requirement is. And the depth is taken as 24, and the width of the beam is 15 inches. Now click on the reinforcement. Because modifier, we haven't discussed that, we will later on change this. The reinforcement, click on the modify, and now click on this M3 design only, which is blue. And the reinforcement will be designed for the grade 60. Click OK. Now, if your grid is not that much different, like we have 25 in one direction and 20 in the other direction, so you can directly assign this beam to all of the beams that are present in your proposed building. But for example, if you have one span different, for example, it is 30 feet or 40 feet, that you cannot assign this size, then you have to change the beam size. Let me show the beams. If I right click on this beam, you can change the
section from this section property assignment tab. We can change it to beam, but it will be changed only in this one beam and similar stories. But the quickest way is to go to the select object type, click on the beams, select all the beams present in the proposed building, go to the assign frame section properties and assign beam 25, 2015 plus 24. So all the beams has been assigned of the same properties. You can change any beam with any sizes as per your requirement. Next is the wall properties in wall section, and it is given in the table 11.3.1.1, which is the minimum wall thickness H, and it says if your walls are bearing, then you have to satisfy these two conditions, that the greater of 4 inches on 1/25, the lesser of unsupported length and unsupported height. And if it is non-bearing, then you have to take the greater of 4 inches and 1/3 of the lesser of the unsupported length and unsupported. The next is the exterior basement and foundation walls, and it says that the minimum size should be 7.5. So we have basement walls. So the basement wall thickness should be minimum of 7.5, but we have taken the basement wall thickness, which is the retaining wall, we have taken as 12 inches. Because when you provide 2 layers of reinforcement, so it cannot be fitted in 7.5 inches, you have to provide 1 layer of reinforcement in 7.5, but you can easily provide, and the concreting can be easily done in the 12 inches thickness of the retaining wall. The next is the lift walls and shear walls. And it says that the bearing, because we have the bearing wall, it will bear the lateral forces, it will bear the seismic forces, and it will bear also the gravity loads. So, greater of 4 inches, it means the thickness should be minimum of 4 inches or 1/24, the lesser of unsupported length and unsupported height. Because we do not have unsupported length, but we have unsupported height. For example, if we calculate this, for example, if you have 11 feet, and if you change it into inches, so if you have 11 feet height unsupported, so if you divide it by 25, so the minimum size should be 5.28. For example, if I take our building, which is 12 feet, and in the 12 feet we have no support. For example, the beams are not connected in the 12 feet because we have 12 feet of story height. So if you convert it into the inches, so it will be 144 inches. If you divide it by 25, so the minimum thickness for the shear walls and lift walls is 5. If you take it 6 inches, so you have to take the maximum of 6 inches and 4 inches. But we have taken is the lift wall is 18 inches and shear wall is 18 inches. And it is again, I have told you that it's based on the experience that when you do design different story, for example, different buildings, 50-story buildings, and then 45-story building, 10-story building, 5-story building, then you will get familiar with the sizes, that how much thickness is required for the lift wall, shear walls in this much stories, right? So initially we will take 18 inches and then we will check the design. If the design is not okay, then you can increase the thickness and FC prime of the walls. So this is the walls. Now we will go to the tab. Section properties, wall sections, click on the add new property and name it as lift wall. And we will use 6,000 psi throughout the lift walls because it is a dual system. It will be
very high sizable demand on these walls. So this is 18 inches. Again, there are stiffness modifiers. We will check and change this later on. I will take copy of this and we will name it as shear wall 6 days. And again, it is 18. Click OK. And now we will define our wall. Retaining wall 12 inches, and the FC prime will use 3 KSI in the wall. Now we will show these and hide all of the other elements. Now we will select all stories and click on this. Go to the assign shell wall sections, and it is shear wall 6 KSI. Select this lifts all stories and in this, and click on this lift wall. Yes. Let me change the color. And you can see that the section has been defined for the walls, lift walls and shear walls. Now we will go towards the basement, and we will select the basement wall. I have selected all stories because it's only in one story, so it will not affect any other member. Wall section, and it will be a retaining wall 12 inches thickness. You can also decrease the FC prime of the shear walls and lift walls when you are designing only a moment frame. But in the dual system, it is advisable not to change the FC prime. So this is done. Now we will go towards the slab. The minimum thickness of the slab shall be calculated. This shall be calculated as per SCI 1819 table 8.3.1.2, and they are this is the table, and these are the different requirements. This is alpha FM. When the alpha FM is less than 0.2, then this section applies. When alpha FM is 0. In between 0.2 and 2, then you have to select the greater of these two. And when the alpha FM is greater than 2, then you have to take the minimum thickness from these two, which is 3.5 inches, or as per calculated from this equation. Alpha FM is actually a ratio between the ECB, which is the beam, and which is the modulus of elasticity and the moment of inertia for the beams, and the elasticity and the moment of inertia for the slab. So when you do different case load cases, so majority of the cases will lies in this table. So we have selected this. We will use our Excel sheet to find the minimum thickness for our span. We have long span of 23.75 feet, which is the clear span, and the short span is 18.75. Because we have 25 feet center to center span, when you subtract 15 inches from 25 feet, you will get 23.75 feet. And when you subtract 15 inches from 20 feet, you will get 18.75 feet as a clear span of the beam, the slab. So for the slab, this is the equation I was talking about. So you have to insert the data for the long span, which is 23.75, and the shorter span is
18.75. And the steel Fy is in PSI, which is 6,000 PSI. So the minimum slab thickness is 6.61. So you can take it 7 or you can take 7.5. It's up to you. Let me discuss this equation which I have used in here, that you have to take the greater of 3.5 inches or coming from this. So it is greater than 3.5. So we'll use this. N is actually the clear length of the span, and Fy is the steel grade, and this beta is actually the ratio. The beta is the ratio of the clear spans in the long to the short direction of the slab, and Ln in the clear span in the longer direction away from face of the beams. So we will take a 6.5 inch slab. We will go to the E tab, define section properties, and click on the slab section, add new property, name it slab 6.5 inches. Select 4,000 because we have selected 4,000 for the beams, and write it is 6.5 and the type is slab. There's no modifiers for the beams. For the slab beam slab system, there's no modifiers. Report and save model. Now select flow types, or you can select it manually by selecting all the floors. For example, you can select it like this, and you can change the slab thicknesses in by assigning the different slab properties. Now select object type, select floors, assign shell slab section, and assign slab 6.5 inches. Now change the color, not legend color, change into gray. The slab property has been assigned. The next is the modeling requirements. The code says that the physical model, the ETA model should represent the physical proposed building and should include all the elements of the latent forces system, right? And it says the stiffness properties of the reinforced concrete and masonry elements if you are designing it for the performance base, or if you are checking if you are modeling your walls as per the FEMA 356, then the stiffness modifier should be considered the effect of the CAT section. These are the stiffness modifiers which is explained in ACI. In the numerical model, stiffness reduction factors shall be applied as per ACI 318-19 table 6.6.3.1.1-A. For the columns, this is the member and condition, and this is the moment of inertia, and this is the cross-section area. So for the columns, the moment of inertia should be taken as 0.7 Ig. For the walls, if you are taking the walls as uncracked, it should be taken as 0.7. If you are taking as cracked, 0.3. For the beams, it is 0.35 Ig. And for the flat plate and flat slab, it is 0.25, but it is not applicable to the slab of the beam slab system. Let me explain only one, that what does it mean 0.7 Ig. So from the research, it has been concluded that when the column X, before it's going it to the yielding, so its 30% capacity has been reduced. So it reduced 30% capacity. So that's why code says that take the moment of inertia of the column is 0.7 Ig. Similarly, for example, for the beam, when the beam fails or
not fails actually when the beam cracks in the flexure. So it's immediately it reduces 65% its flexure capacity. So that's why code says take 0.35 IGF for the beams. We will go to the E tab, define frame. I will do it for the one column and you can do it for the rest of the columns. Let me do it for the 48, modify. Click on the show modifiers and moment of inertia about 2 axis is 0.7 and moment of inertia about the 3 axis 0.7. This is for the columns. For the beams, modify, click on the stiffness modifiers and click on the moment of inertia is 0.35 about 3 axis and 0.35 about the 2 axis. The torsional constant, it is not mentioned in ACI code, but in the European code, it is mentioned to be taken as 0.1. But in the ACI, there is a report. I will share that report with you that when the beam fails in torsion, so it reduces its torsion capacity up to 90%. So you have to take the only 10% capacity of the beams when you are designing your structure as a linear elastic analysis. So for the walls, I will do it only for the one wall. You will do it for the shear walls as well. Click on the modifiers and you will take it as track, copy it, and we will design it for the in plane out as well as out of plane. This membrane is for the in plane and bending for the out of plane. And this is the stiffness modifiers as per the code. So that's it. That is the end of the stiffness modifiers. The next is the load pattern. I think we have done enough. This is enough for today. And if you have any questions, you can ask. सर सबसे पहले ये क्वेश्चन है कि हम जो कॉलम्स की साइजेस लेते हैं ना ये तो बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस लेते हैं लेकिन अक्सर जो आउटर कॉलम्स है उनकी साइजेस क्यों एक्सटीरियर कॉलम्स की साइजेस क्यों बड़े होते हैं एज कंपेयर टू इंटीरियर कॉलम्स स्टीरियस कॉलम के साइजेस तो हमेशा रिड्यूस होते हैं, ज्यादा तो नहीं होते। हमने भी कम लिए हैं। इंटीरियर अच्छा कॉलम्स की 48 है। इंटीरियर की बात कर रहा हूँ सर सॉरी अच्छा, इंटीरियर की इस वजह से होती है कि इंटीरियर पे आपके पास लोड ज्यादा होता है। अगर मैं आपको टैब में दिखाऊं तो अगर मैं इस इंटीरियर कॉलम की बात करूं इसकी, तो आप देख सकते हैं इस पे आपके पास, अगर आप इसकी आपको एरिया कंट्रीब्यूशन मेथड आपको पता है या नहीं है, लेकिन अगर आप इस कॉलम की एरिया कौन कौन सी एरिया का लोड ये ले रहा है, तो अगर आप इसको हाफ हाफ डिवाइड कर ले तो ये आपके पास इस तरह पूरा एरिया ले रहा है। ठीक है, एक स्क्वायर का ले रहा है। लेकिन अगर आप एक्सटीरियर का ले रहे हैं तो आपके पास सिर्फ आपके पास एक रेक्टेंगल ले रहा है, हाफ पोर्शन ले रहा है एज कम्पेयर टू द इंटीरियर कॉलम। तो इंटीरियर कॉलम पे लोड ज्यादा होता है, इस वजह से हम इंटीरियर कॉलम की साइजेस आप ज्यादा लेते हैं। ओके ओके जबरदस्त सर और सर एक और क्वेश्चन है कि जो एफ सी प्राइम हम यहाँ पे 6000 पीस टाई ले रहे हैं ना हर कॉलम के लिए जी जी। तो मतलब एज पर साइड जब हम इतनी हैवी कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उस पे तो स्ट्रेंथ मोस्टली हमारे साथ 4000 पीस है आती है या अराउंड सच सच लाइक दैट तो फिर हम इतना ज्यादा क्यों कंसीडर करते हैं ये तो डिपेंड करता है कि साइट पे इंजीनियर्स कौन है और कौन से मिक्स डिजाइन वो यूज कर रहे हैं। इसके लिए नॉर्मली आप बेचिंग प्लांट लगाते हैं। तो बेचिंग प्लांट में जब आप मिक्स डिजाइन करेंगे तो उसको फिक्स रेशियो में आपके पास सीमेंट, कंक्रीट, फाइन एग्रीगेट और सिलिका फ्यूम, फ्लाई ऐश जो भी आप एडमिक्सर यूज कर रहे हैं, तो उसको उस मिकदार में उसको ऐड करता है तो आपको स्ट्रेंथ 6000 मिलेगा। हमने किए, मैंने तकरीबन 100 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स किए, तकरीबन उसमें 50 से ज्यादा हाई राइज है और 20 स्टोरी से ऊपर। तो उसमें हमने 6000, हमने एक 8000 भी किया है। हमारे पास गीगा माल आया था इस्लामाबाद, तो उसमें हमने 8000 यूज किया, तो अचीवेबल है। लेकिन उसके लिए आप बेचिंग प्लान लगाए, ये सादा मिक्सर पे आपके पास अचीव नहीं होता कभी भी।
क्योंकि सर सादा मिक्सर पे एमआरएस बाय एनुअल में 1:4 रेशियो पे हमें 3000 स्ट्रेंथ दिया गया है ना सीएनडब्ल्यू वाला। जी जी। तो इतने मतलब 7000 8000 तो फिर अचीव करना नॉर्मल मिक्स से तो इम्पॉसिबल होता है। नहीं नहीं, नॉर्मल मिक्सर से नहीं होगा, ये आप बैचिंग प्लांट से करेंगे। ठीक है ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर सलाम। सर कुछ थंब रूल्स नहीं है सिलेक्शन कॉलम्स के साइजेस को सिलेक्ट करने के लिए, लाइक और बीम्स की सिलेक्शन के लिए, कि कुछ थंब रूल्स जो एज अ स्ट्रक्चरल इंजीनियर यूज करते हैं कि इतना स्पैन होगा तो हम इतना ट्रायल के लिए ये साइज ले लेंगे, या इतना स्पैन होगा तो हम ट्रायल के लिए ये साइज ले लेंगे? नहीं, उत्तम रूल आप बना ही नहीं सकते ना। फॉर एग्जांपल मैं आपको मिसाल देता हूँ कि आपके पास एक 3 स्टोरी बिल्डिंग है। तो अगर आपके पास नॉर्मल स्पेन हो, फॉर एग्जांपल 20x20, तो आप ने कई सारे बिल्डिंग डिजाइन किए होंगे, तो आपको याद होगा कि यार एक थंब रूल आपने बनाया होगा कि यार इसके लिए 18x18 ठीक है, 3 स्टोरी बिल्डिंग है। लेकिन आप अगर आपके पास स्पेन बहुत ज्यादा हो जाए ना, 3 स्टोरी में भी फॉर एग्जाम्पल 50x50 स्पेन हो जाए, तो फिर आपका वो थंब रूल वहाँ पे काम नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ पे आपके पास जो पी डेल्टा इफेक्ट्स, सेकेंडरी मोमेंट्स इफेक्ट इतना ज्यादा आएंगे कि आपका थंब रूल काम नहीं करा। फिर आप 48x48, 54x54 साइज पे भी जा सकते हैं। तो ऐसा कोई खास थंब रूल है नहीं, लेकिन आप अपने लिए बना सकते हैं। ओके सर। और सर जो है मटेरियल के लिए भी कोई नहीं है? जी। मतलब कि अब एज एज अ जूनियर इंजीनियर अगर हम स्ट्रक्चर इंजीनियर कहीं जाते हैं तो हमें तो नहीं अब एक्सपीरियंस इतना कि हम जो है वो जाते ही ये कहना शुरू करते हैं कि हम मतलब कि स्टार्ट में फिर हम इस तरह ट्रायल बेसिस के ऊपर इसको इसके एनालिसिस करेंगे, फिर जाके हमें समझ आएगी, या कोई कोई भी इस तरह का कोई स्पेसिफिक हो कि हमें ये हो कि हाँ अगर इतनी 20 स्टोरी बिल्डिंग है तो हम जो है उसके ऊपर मतलब कि नीचे वाले जो कॉलम्स है वो हम 6000 पे ले जाते हैं, उसके बाद 10 स्टोरीज के बाद हम उसको 4000 पे ले जी जाते हैं, जी, मैं समझ 5000 गया पे। समझ गया। ये आपके दो तरीके से आप उसको सी सकते हैं एज जूनियर इंजीनियर। क्या आपकी एक फर्म में जाए ना, तो एक तो आप उसकी फर्म के जो प्रीवियस डिजाइन है वो आप चेक करेंगे। वो उनसे आप कहेंगे, या वो तो आपको खुद देंगे कि ये प्रीवियस डिजाइन है, इसको आप चेक कर ले। ये 20 स्टोरी बिल्डिंग है, इसको हम इसमें हमने क्या क्या किया है, क्या क्या नहीं किया। एक तो आप प्रीवियस ड्राइंग से एक्सपीरियंस लेंगे, दूसरा आप ट्रायल से करेंगे। जब आप मॉडलिंग स्टार्ट करेंगे, डिजाइन स्टार्ट करेंगे, ऑटोमेटिकली आपका थंब रूल खुद ब खुद ही बन जाएगा। तो इन दो तरीके से आप कर सकते हैं। ऐसा कोई खास कोड वगैरह तो नहीं है इसकी वजह कि आप ये साइज लेंगे। सर कॉलम्स इसमें कॉलम्स आर वेरी ये ट्रिकी। वो अब उसको कोड ने कुछ बनाया ही नहीं। कॉलम स्लैब सब कुछ के लिए किया, लेकिन कॉलम्स के लिए कुछ नहीं किया, क्योंकि कॉलम्स वेरी करते हैं बहुत ज्यादा। जी जी। Excuse me. Sir, आपने my question is about the section, column section of the statement, राइट। about the exterior. You have take potato by potato size of the exterior column of the document, but this is just one story column. I think it's so big section for the one story. राइट, बट the problem you will face in the single story and 2 story, that the new code, which is the building code of Pakistan 2021, so it will apply too much forces on the very low rise building. So you can do it as a case study, that you design a 20-story building and you take the column size as 30x30 or 42x42, and you take 3-story building and you take the same sizes. So the amount of reinforcement you are getting in 20-story building will be less than as compared to 3-story building. So obviously it will be economical. Yes, you are right. So to decrease the sizes of these columns, you can decrease the column to 18x18, 22x22, 42, 24x24, and you can make the building as economical. I will change it. It's a very good suggestion, but I will show you that by decreasing the column sizes, you will see that how much reinforcement it will need. It will need 5%, 4% reinforcement, and inshallah, when we are doing the design of the columns, then we will decrease the size up to which we can decrease, and you can see the difference in between the size of the 42x42 and 18x18 column. Yes, sir. Sir, actually, I have also so many clients in the market. I am also giving service to so many architects. Sir, because sir, personally, I am facing social problem from the client.
when I provide a little bit of big section, you know about the clan. They are thinking that clan is not economical to reduce the size. And also, especially from the architecture side, I am facing always I'm facing a problem because they don't want a big section and big column to produce. This is the most problem from architect and the client. Then you have to apply the strategy what we have applied, that when the architect have issue from the larger columns, then you say it in clear words that if you do not want to increase the column sizes, then the reinforcement in the lower stories or in the smaller columns will be higher. Too much reinforcement will be have provided, so you have to now you have to select the larger columns, or you have to select the huge amount of reinforcement. So obviously they will go towards the larger columns because they do not want the client to have uneconomical structure. And it's the better option is that you talk to the client personally, that we have sent this column planes to the architect, and we have issue. So we can adjust the architectural planes, but we cannot decrease the column sizes because we will provide more reinforcement. So you tell me, you want to save money or you want to change the architecture plans. So then client will ask the architect to change the plan, and your problem will be solved. It's okay. Thank you so much. सर एक और क्वेश्चन सर हमने आपने पिछले लेक्चर फर्स्ट लेक्चर में आपने बताया कहा था कि हम जो है हम रेक्टेंगुलर कॉलम्स जो है वो ज्यादा यूज करते हैं तो सर हमने इस पूरी बिल्डिंग के अंदर तो सारे स्क्वायर कॉलम यूज किए हैं ऐसा क्यों किया तो आपके पास जो स्क्वायर कॉलम है वो भी एक रेक्टेंगल की टाइप है। रेक्टेंगल का मतलब है कि स्क्वायर ना हो ना, रेक्टेंगल तो आपके पास स्क्वायर भी एक रेक्टेंगल ही है। सर वो डायमेंशंस में थोड़ा ऊपर नीचे होता है मैं इसलिए वो समझा था नहीं वो प्योर रेक्टेंगल नहीं, वो तो मैं जनरल वर्ड यूज किया था ना, रेक्टेंगल। ओके सर जी जी। और सर दूसरा सर एक ऑटो कैड इसमें ई टैब्स के अंदर एक ऑप्शन होता है कि आप ऑटो सिलेक्शन करते हैं कि आप एक मतलब कि काफी सारे साइजेस दे देते हैं ऑटो कैड को और ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट करते हैं जी वो सर बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल नहीं होता डिजाइन के लिए तो वो ज्यादा वेरी करता है ना, वो स्टील स्ट्रक्चर में ज्यादा इकोनॉमिकल होता है। लेकिन अगर आप रेनफोर्समेंट आरसीसी बिल्डिंग की बात करें तो वो आपको ईटेप तो नहीं समझता ना, वो तो आपको बस इकोनॉमिकल डिजाइन दे देगा। वो आपको एक स्टोरी में एक साइज दे देगा, दूसरी स्टोरी में दूसरी साइज दे देगा, तीसरी स्टोरी में दूसरा। फॉर एग्जाम्पल नीचे आपको 48 दे देगा, ऊपर 24 दे देगा, उसके बाद फिर 48 दे देगा, फिर 24 दे देगा, तो इट इज नॉट पॉसिबल। सर सर एक जो हम आगे डिजाइन करेंगे मॉडलिंग, तो उसमें जो कॉलम की साइजेस फिर हम करेंगे तो वो बेस्ड ऑन ट्रायल मेथड पे करेंगे, मतलब बेस्ड ऑन लोड पे करेंगे। नहीं, हमने जो असाइन किया वो उसको डिजाइन करेंगे, फिर चेक करेंगे अगर किसी कॉलम में मसला आ रहा है तो फिर उसकी साइज को चेंज करेंगे, साइज को चेंज करेंगे या उसकी एफसी प्राइम को चेंज करेंगे। ठीक है सर, थैंक यू। सर एक क्वेश्चन है सर ये जो आपने स्टिफनेस मॉडिफायर्स दिए हैं ना कॉलम के लिए बीम के लिए तो सर स्लैब के लिए क्यों नहीं लिए जो हमारे पास जो 25%। तो स्लैब के लिए इसलिए देखिए कि आपके पास ये बीम स्लैब सिस्टम है, और जब बीम स्लैब सिस्टम हो तो आपके पास जो ज्यादातर साइज्मिक फोर्सेस है तो वो बीम्स ले लेता है। स्लैब इतना फोर्सेस पे वो सिर्फ स्लैब वो आपके पास जो फोर्सेस है वो कलेक्ट करता है और बीम को देता है। वो फोर्सेस फिर बीम कॉलम को देता है, कॉलम फाउंडेशन को ट्रांसफर करता है। लेकिन आपके पास अगर फ्लैट प्लेट और फ्लैट स्लैब सिस्टम हो तो उसमें बीम्स तो नहीं होते। फिर वो जो स्लैब है वो आपके पास साइज्मिक फोर्सेस ले बीगा, कलेक्ट भी करेगा और उसको रेजिस्ट भी करेगा और कॉलम को ट्रांसफर करेगा। तो उस केस में फिर आप कोर्ट कहते हैं कि इसकी स्टिफनेस मॉडिफायर्स आप ले। सर फ्लैट प्लेट सिस्टम में तो जो सेकेंडरी बीम्स होते हैं तो उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे मतलब हम उसमें फिर स्टिफनेस मॉडिफायर लेंगे 0.25। फ्लैट प्लेट सिस्टम में सेकेंडरी बीम्स तो कुछ नहीं होते। फ्लैट प्लेट सिस्टम में आपके पास पेरिफेरी पे बीम्स होते हैं, बाकी इंटरनल कोई बीम तो नहीं होता। वो आप इंटीग्रल बीम की बात करें, इंटीग्रल बीम इज समथिंग एल्स, वो तो पंचिंग के लिए आप यूज करते हैं। सर मेरा एक और लास्ट क्वेश्चन है सर, जो हम ये मॉडलिंग करेंगे ना इंशाल्लाह, तो इस पे जो स्टोरी वाइज जो लोड डिस्ट्रीब्यूट होती है ना, मतलब 10 से 5, 5 से 4, फिर बाद में फाउंडेशन में,
तो इसमें हम फाउंडेशन स्टील पे डिजाइन करेंगे या वो ई टैप में नहीं करेंगे कि कितना लोड फाउंडेशन पे आएगा एट द एंड ऑफ द मॉडलिंग? तो लास्ट में हम राफ्ट डिजाइन करेंगे, इसकी फाउंडेशन डिजाइन करेंगे। ठीक है थैंक यू। सर एक लास्ट क्वेश्चन है सर, ये जो हम लोड्स लेते हैं ना, इसमें अभी ये 20 स्टोरी है तो इसमें हमने साइज में लोड्स लेंगे, इसमें हम जी रेड जी जी। लोड लेंगे, स्केल लेंगे। तो अगर हम मतलब 2 स्टोरी बिल्डिंग अब डिजाइन करना चाहें ना, ग्राउंड और फर्स्ट हो, जिस तरह घर हो, तो उसमें भी सर साइज में और फोर्सेस कंसिडर करेंगे या नहीं, सिर्फ डेड लोड कॉम्बिनेशन लेंगे? वो तो डिपेंड करता है कि आपकी जो बिल्डिंग है वो कहाँ पे है। फॉर एग्जांपल अगर वो कश्मीर में है, साइस्मिक जोन 4 में है, तो फिर आप तो जाहिर बात है उसके लिए अर्थक्वेक के लिए डिजाइन करेंगे। लेकिन अगर आप वो इधर की कहीं पेशावर में है जहाँ पे जल्जले बहुत कम आते हैं और उसकी जो स्पेक्ट्रल एक्सीलरेशन है वो बहुत ज़्यादा कम है, और बहुत सारे जल्जले गुजरे, इस हिस्ट्री आप देखेंगे कि कोई बिल्डिंग में क्रैक वगैरह तो नहीं आई, तो फिर आप सिर्फ ग्रेविटी के लिए डिज़ाइन कर सकते हैं। अदरवाइज इस तरह आप साइट की जो सेismicity है उसको आप चेक करेंगे, उस तरह डायरेक्ट सिर्फ ग्रेविटी के लिए डिज़ाइन ना करें। और सही है सर, और विंड लोड को नहीं लेंगे ना सर? विंड लोड अब ये वाला बिल्डिंग है सर, ये 20 स्टोरी है तो इसमें तो ऑफकोर्स हम विंड लोड कॉम्बिनेशंस लेंगे ना, कि नहीं इसमें भी? वो मैं इंक्लूड कर दूंगा, लेकिन मैंने पहले लेक्चर्स में कहा कि अगर आपके पास हाई साइज एरियाज हो तो जब आप विंडो ले भी लेंगे तो वो यूजलेस होगा, क्योंकि ई टेप आपको डिज़ाइन साइज्मिक फोर्सेस के कम्बिनेशन भी देगा। वो आप देखेंगे, हम कॉलम को डिज़ाइन करेंगे तो मैं आपको शो करूंगा कि इसने कौन से कम्बिनेशन के लिए कॉलम को डिज़ाइन किया। फिर उस कम्बिनेशन में हम जाएंगे तो आप देखेंगे वहाँ पे वेट नहीं होगा, साइज्मिक होगा। सही है सर, थैंक सर ये कॉलम सर ये कॉलम कार्बल क्या होते हैं सर, वो किस तरह हम डिजाइन करेंगे, हम डिजाइन चाहते हैं या डीप बीम सर वो भी एकदम जिस तरह हमने बीम डिजाइन करते हैं, वो जो टेबल आपने वो दिखाया सर वो कौन एसीआई कौन सी का? बीम? डीप बीम? जी सर डीप बीम, तो वो भी उसी पे डिजाइन करेंगे या कार्बल कॉलम जो होते हैं सर वो किस तरह डिजाइन करेंगे? कार्बन कॉलम्स? कार्बल कॉलम। अच्छा, जो पेयर्स करते हैं आप वो बता रहे हैं, ब्रिजेस में जो यूज होता है? जी सर बिल्कुल वो एग्जैक्टली उसको अपना सॉफ्टवेयर है CSI ब्रिज, वो उसमें ये करते हैं। इसमें मॉडलिंग होगी लेकिन उसमें थोड़ी सी डायरेक्ट टेम्पलेट्स नहीं है, उसमें डायरेक्ट टेम्पलेट्स है तो आप यूज कर सकते हैं। लेकिन कंसेप्ट सर यही है, उसी तरह जिस तरह हम कॉलम डिजाइन करते हैं उसमें कंसेप्ट चेंज होता नहीं, उसका अपना कोड है, H2 आप यूज करेंगे, H2 की है? अपनी अच्छा रिक्वायरमेंट है। ये अब ACI वहाँ पे यूज नहीं होता। अच्छा, और सर ये डीप बीम सर वो तो डिजाइन कर सकते हैं ना इस पे? डीप बीम तो आप कर सकते हैं, वो टाई एंड स्ट्रट मेथड है, वो तो आप यहाँ पे कर सकते अच्छा सर, ये टाई एंड शर्ट जो मेथड है सर, उससे सर हम उस पे डिजाइन क्यों नहीं करते? वो तो यूनिफाइड है सर, उस पे तो एट अ टाइम कॉलम भी डिजाइन होता है और स्लैब भी डिजाइन होता है और बीम भी डिजाइन होता है, तो वो हम अभी यूज क्यों नहीं करते सर? तो आप कर लेना, ये टेप को बताया था कि वो इंक्लूड कर ले इसमें। और सर इस बार एसीआई जो 19 जो न्यू वर्जन है उसमें तो चैप्टर भी इंक्लूड किया है, पहले तो नहीं था, वो इंडेक्स में अक्सर होता था सर। हाँ, ACI कोड में तो है लेकिन ई टैब में नहीं है। अच्छा ई टैब में नहीं है? जी जी, ई टैब में नहीं है। अच्छा वो सर ये पाइल केप सर वो एज स्लैब डिजाइन करेंगे या भी ये भी एज डिप वो करेंगे सर? वो तो आपके पास डीप फाउंडेशन आती है ना, थिक स्लैब्स आती है। स्लैब्स ही अच्छा होती है सर वो लेकिन थिक स्लैब्स होती है। थिक स्लैब थ्योरी इस पे अप्लाई होगी, थिन स्लैब थ्योरी अप्लाई नहीं होगी। आपने थिक प्लेट सर एंड ये थिक स्लैब थ्योरीज पढ़े आपने, में सीखी? सर किए लेकिन सर अभी तो पढ़े नहीं है सर ये। आप अधील बात कर रहे हैं? जी सर मैं अभी बात कर रहा हूँ। तो इसकी अपनी कोर्स है, मेम्ब्रेन प्लेट्स एंड शेल्स। उसमें अच्छा थिन प्लेट्स एंड थिक प्लेट्स होती है। तो आपके पास जो अच्छा नॉर्मल जितने भी स्लैब्स डिजाइन करते हैं वो थिन प्लेट्स होती है, थिन स्लैब, थिन अच्छा शेल्स। और जो आपके पास जो अच्छा। फाउंडेशंस होती है, फॉर एग्जांपल राफ्ट, पाइल केप्स, तो उसकी जी आपकी सर। डिजाइनिंग वो थिक शेल्स होती है। वो थिक अच्छा शेल जो थ्योरी है वो इस पे अप्लाई होगी। कोई सर खास वैल्यू नहीं है, अगर उससे इंक्रीज हो जाए तो हम वो थिक शेल में कंसीडर करेंगे और वो दूसरे तीन शेल में वो करेंगे? हाँ, इसकी कोई खास रेशो है, वो अभी मैं मुझे जहन में नहीं आ रही, लेकिन मैं आपके अच्छा साथ डॉक्यूमेंट है वो शेयर कर लूंगा, उसमें सारी डिटेल है। ओके सर, बड़ी मेहरबानी सर, थैंक यू। इरफान साहब जमा द ईमेल चिकम दे दा फुल शवे दे का ना
ديك سبيس نشتغل طول بقى لك ان جي او ادير هذاك انا ما يصير ما تخيو لكتشر من ذا ريسيف شيء انه تصل بقى عندي زبل ايميل ده لو كا تريون ما تراسل هذا دور زي او ننوانا مصر نانو درايف خو تاسو درايف ته خو زه سینډ کوم دا خو شیر شوي کنه شیرینګ کې خو ډرایو ډکېدو سره مسله نشته جوجل درايف ګوګل ډرایو ته به ته لاړ شي هلته به وګورې شیرډ وت می هغې باندې به کلیک کړي تاسو به فولډر شیر شوي ها جوجل درايف زبل چیک کوم سب صحیح تاسو چک کړئ که بیا هم څه مسله وه بیا به حل شیر دی ٹھیک شو لینا میرا بھائی السلام علیکم جی جی सर सर ये जो एक्सपेंशन जॉइंट जो होता है हम बिल्डिंग में देता है जी ये हम किस बेस पर देता है ये इसकी अपनी रिक्वायरमेंट्स होती है इसका एसीए का अपने कोड है उसके बेस पे देते हैं लेकिन उसकी जब आप प्रैक्टिकल जब आप करेंगे तो नॉर्मली 200 फीट तक आपके पास उसकी लिमिट आ जाती है कि अगर आपके पास एक बिल्डिंग 400 फीट लॉन्ग है तो उसको आप 2 पे डिवाइड करें 200 कर ले अगर आपके पास 350 लॉन्ग है तो उसको 200 कर ले 150 कर ले इस तरह आप या 150 150 180 कर ले तो 200 लिमिट है जब आप जितने भी कोर्स पढ़ लेंगे तो उसका खुलासा 200 फीट ही आएगा और सर इसका जो रफ फाउंडेशन है वो सेम होगा या डिफरेंट होगा और आप फाउंडेशन में एक्सप्रेशन जॉइंट की बात कर रहे हैं यस सर एक्सपेंशन जॉइंट तो बेटर ये है कि आप राफ को एक ही बनाएं ठीक है ऊपर एक एक्सपेंशन जॉइंट दें क्योंकि अगर आप राफ में एक्सपेंशन जॉइंट देंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा इश्यूज आएंगे पंचिंग शेयर का फिर आप इंटीग्रल बीम डिज़ाइन करेंगे तो इट इज़ एडवाइजेबल कि आप हमेशा राफ को एक ही दें ऊपर एक्सपेंशन जॉइंट प्रोवाइड करें ठीक है सर चलिए एक्सक्यूज मी सर जी जी सर ये जो आपने वॉल में बात की अनसपोर्टेड हाइट की उसकी तो समझ आ गई ये अनसपोर्टेड लेंथ क्या है वॉल में ये अनसपोर्टेड लेंथ आपके पास फॉर एग्जांपल आउट ऑफ द बिल्डिंग एक लिफ्ट आ रही है लिफ्ट एक कॉर्नर पे है राइट और उसकी जो लेंथ है वो उसके साथ कोई कॉलम अटैच नहीं है कोई बीम अटैच नहीं बस सिंपल पड़ा हुआ है तो उसको जो लेंथ है उसको आप मेजर करेंगे तो लेंथ ज़्यादातर गवर्न नहीं होती इसलिए मैंने लेंथ को डिस्कस भी नहीं किया ज़्यादातर गवर्निंग आपके पास हाइट आती है ये आउटर साइड की जो लेंथ होती है लिफ्ट की उसको वो लेंथ आप लेंगे ठीक है दूसरी बात सर ये नहीं कि लेट से हमारे पास बिल्डिंग है इसमें हम 2-3 कॉलम जो है ना उसको हम एज ए ग्रेविटी कॉलम डिजाइन करते हैं तो ये एक्चुअली फील्ड में हम किस तरह जो है ना इसको डील करते हैं क्योंकि इनके बीच में कनेक्शन तो मोनोलिथिक होता है ना तो वो डिजाइन लाइफ में वो इसके ऊपर लोड आ सकते हैं वो डिटेलिंग से आप करेंगे डिटेलिंग से डिटेलिंग का मतलब ये कि इंटरनल कॉलम्स आपने सिर्फ ग्रेविटी के लिए किए आउटर जो एक्सटीरियर कॉलम्स है वो आपने साइज्मिक के लिए किए तो जो एक्सटीरियर कॉलम्स की डिटेलिंग है वो आप इतना स्ट्रांग बनाएंगे कि अगर अर्थक्वेक फोर्सेस आएंगे तो वो सारे फोर्सेस खुद ही एब्जॉर्ब कर लेगा एनर्जी खुद ही एब्जॉर्ब कर लेगा इंटरनल कॉलम के लिए कुछ एनर्जी छोड़ेगा ही नहीं आप इंटरनल कॉलम को कमजोर बनाएंगे एज कम्पेयर टू द एक्सटीरियर कॉलम्स तो फिर जो दन जो इंटीरियर कमजोर आपके पास है तो वो कमजोर फोर्सेस ले ही नहीं सकते तो एक्सटीरियर सारे फोर्सेस को एनर्जी लेगा एनर्जी डिसिपेट करेगा थ्रू बीम कॉलम जॉइंट और इंटीरियर कॉलम सिर्फ ग्रेविटी के लिए काम करेगा तो ये सारा सब कुछ काम डिटेलिंग में है ठीक है और सर दूसरी बात आपने प्रोजेक्शन की बात की है ना कि ये जो प्रोजेक्शन रिक्वायरमेंट्स लेट से हमने कोई बीम को जो है ना कॉलम के साथ फ्लश करना है तो इट मींस कि ये हम नहीं कर सकते फिर ऐसे हमारे में नहीं कर सकते हैं फ्लश कर सकते हैं क्योंकि उसमें तो आपके पास प्रोजेक्शन आपने खत्म कर दिया जीरो कर दिया प्रोजेक्शन प्रोजेक्शन ईच साइड पे प्रोजेक्शन रिक्वायरमेंट्स है ना कि ये नहीं इस साइड पे नहीं है ना वो कह रहे कि प्रोजेक्शन ज्यादा नहीं होना चाहिए प्रोजेक्शन जितना ज्यादा कम हो तो वो तो अच्छा बात है ना क्योंकि आपके पास जो बीम कॉलम जॉइंट है वो ज्यादा कन्फाइंड होगा अब क्वेश्चन ये है कि अगर आपके पास एक सिस्टम है उसमें प्रोजेक्शन ज्यादा आ रहा है और आप बीम को बढ़ा भी नहीं सकते तो फिर आप क्या करेंगे तो फिर आप उसकी बीम कॉलम जॉइंट की प्रॉपर डिटेलिंग करेंगे प्रॉपर उसको डिजाइन करेंगे बीम कॉलम कनेक्शन नहीं सर लेट से बीम के साइज कम है कॉलम से उसको हमने एक साइड पे फ्लश किया है लेकिन दूसरे साइड पे वो फ्लश नहीं है ना लेट से कॉलम ठीक है ना ठीक है ना जो फ्लश हो गए तो वहां पे प्रोजेक्शन जीरो हो गए तो ठीक है ना वो तो सेकंड साइड पे सर प्रोजेक्शन है ना लेकिन वो आप रिक्वायरमेंट चेक करेंगे ना कि कॉलम के साइज से ज्यादा प्रोजेक्शन है तो फिर आप उसको बीम कॉलम कनेक्शन को प्रॉपरली डिजाइन करेंगे ये हाल है
और जैसे सर आपने वो बात की ना कि लेट से अगर क्लियर स्पैन जो है ना वो 4D से कम है तो ये एज अ सिंपल बीम डिजाइन होगा, इसका क्या मतलब है सिंपल बीम? समझ नहीं है, दोबारा बताएं। आपने सर बात की ना कि लेट से जो हमारे पास स्पैन लेंथ होता है ना, क्लियर क्लियर लेंथ ऑफ बीम, वो जो है ना 4D से कम नहीं होना चाहिए। अगर हाँ हाँ, 4D से उसको कम है आप तो वो उसको एज ए स्पेशल बीम उसको डिजाइन नहीं करेंगे, एज एन ऑर्डिनरी तो बीम डिजाइन करेंगे। क्या मतलब सर स्पेशल बीम और ऑर्डिनरी बीम? स्पेशल बीम मीन स्पेशल मोमेंट फ्रेम का बीम, ऑर्डिनरी बीम हाँ। ऑर्डिनरी फ्रेम का बीम। अच्छा। आपने और एमएससी की है कि नहीं की? कर रहा हूँ सर अभी, अच्छा, कर रहे हो। प्रोग्रेस में। एडवांस रेनफोर्स कंक्रीट डिजाइन नहीं पड़ा? पढ़ा है सर इसे। अच्छा, तो ये आप तो ईटेब में फिर मेंशन करेंगे कि ये मेरा बीम है, इसको स्पेशल मोमेंट डिजाइन ना करे, वो वहाँ पे ऑप्शन है, वो मैं आपको बताऊंगा। अच्छा। अच्छा सर दूसरी बात नहीं सर, वो डिटेलिंग तो हम सर बाद में करते हैं ना, डिटेलिंग तो हम बाद में करते हैं, तो डिटेल्स को हम क्यों समझाएंगे उसी टाइम? तो हम खुद करते हैं डिटेलिंग। डिटेलिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, इनिशियल मॉडलिंग में तो आपको पता है कि ना इसकी जो स्पेन है वो 7.2 फीट से कम है, तो हाँ। it means it cannot be designed as a special monoframe beam, so you have to assign ordinary beam detailing to the E-tape, तो E-tape उसको ordinary beam डिजाइन कर लेगा, तो फिर आप उसके बाद उसकी डिटेलिंग करेंगे। ठीक है। और सर ये हमारे पास कुछ बिल्डिंग्स होते हैं ना, इसको वहाँ पे लेट से अगर हमने जो स्लेब होते हैं हमने प्री कास्ट स्लेब जो है ना वहाँ पे इंस्टॉल करने हैं, तो फिर इसकी मॉडलिंग हम किस तरह करते हैं? बीम का फ्रेम वो हमारे पास फ्रेम कनेक्शन होता है, लेकिन जो स्लेब होता है वो प्री कास्ट का होता है, मतलब मंगलेती कनेक्शन नहीं होती। तो ये फिर हम क्या किस तरह करते हैं इसकी? तो वो उसमें E-tape में आपके पास प्री कास्ट बीम्स होते हैं ना, तो उसको आप डिजाइन कर लेंगे, मॉडल कर लेंगे, स्लेब उस पर डाल देंगे, तो E-tape खुद ब खुद ही समझ जाएगा कि दिस इज नॉट मोनोलिथिक कनेक्शन। नहीं लेट से हमारे पास सर स्लेब जो है ना वो प्री कास्ट होते हैं, तो उसमें भी हमने मतलब जो चले, आप ये आउट ऑफ द लेक्चर बात कर रहे हैं, ये हम जनरल लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे, अगर इस लेक्चर में कोई क्वेश्चन तो काइंडली वो कर लें। अच्छा, तो इसमें सर ये ना कि ये जो लेट से हमारे पास वाटर टैंक है, तो उसकी केस में फिर हमने स्टिफनेस मॉडिफायर जो है ना वन ही रखने हैं या कम करने हैं? वाटर टैंक्स वॉल्स की, हाँ। वाटर टैंक वॉल्स का उसको आप अलग एक मॉडल में डिजाइन करेंगे, उसमें आप स्टिफनेस आप लेंगे, आपके आप पे डिपेंड करता है कि आप उसकी एनालिसिस किस तरह कर रहे हैं। अगर लीनियर इलास्टिक करें तो फिर आप क्रैक लेंगे, अगर आप नॉन लीनियर करें तो फिर आप वन लेंगे। अच्छा, और सर ये नॉन बियरिंग वाल भी यहाँ पे टेबल में एक वो टर्म था, नॉन बियरिंग वाल का क्या मतलब है इधर? नॉन बेरिंग वॉल का मतलब है कि उस पर कोई लोड नहीं है, बाउंड्री वॉल्स है। बाउंड्री वॉल्स, अच्छा। ठीक है। और सर एक क्वेश्चन वो है ना, ये जो आप सर कॉलम के साइजेस के लिमिट्स डिस्कस कर रहे थे ना, वो तो एसएमआरएफ के थे, और हम एक्चुअली डिजाइन कर रहे बिल्डिंग डुअल सिस्टम, तो वो चेक्स यहाँ पे आप क्यों अप्लाई कर रहे थे सर? कौन से चेक्स? जो आप कॉलम के मिनिमम डायमेंशंस और बीम के मिनिमम डेप्थ वगैरह, वो तो एसएमआरएफ के थे ना, मतलब स्पेशल मोमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम्स के। यहाँ पे हम डुअल सिस्टम डिस्कस कर रहे हैं, तो डुअल सिस्टम पे आपने एसएमआरएफ के रिक्वायरमेंट्स वहां से उठा के ये वो अप्लाई कर दिए यहाँ पे। आप पहले लेक्चर्स में नहीं थे कि लेक्चर्स नहीं देखे आपने? नहीं सर लेक्चर में मैं था अभी सर, आप डिस्कस कर रहे थे ना वहाँ पे जो कॉलम के तो डायमेंशंस। आप डुअल सिस्टम में स्पेशल मोमेंट फ्रेम करें ना, फ्रेम भी स्पेशल होगा, उसके साथ वॉल्स भी होंगे, दिस इज कॉल्ड डुअल सिस्टम। अच्छा ठीक है। यस। चलिए, दिस इज इनफ फॉर टुडे।